असं म्हटलं जातं की मध्य प्रदेश हे कलेचं माहेरघर आहे। याच मध्य प्रदेशातील इंदूर हे शहर, इंदूरला जोडूनच असलेलं उज्जैन हे शहर तर अगदी कलाप्रेमींचं आवडतं स्थान आहे। उज्जैन शहरामध्ये कलाव्रत या संस्थेद्वारे दरवर्षी नित्यनेमाने गेल्या 26 वर्षांपासून देशभरातून कलाप्रेमींसाठी वेगवेगळ्या स्पर्धांचं आयोजन केलं जातं। मात्र यावर्षी कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर या स्पर्धा ऑनलाईन आयोजित करण्यात आल्या होत्या। या आयोजित करण्यात आलेल्या स्पर्धेमध्ये अमरावती शहरातील प्रख्यात असलेल्या श्री आर्ट कलावर्ग कला निर्मितीच्या अनेक विद्यार्थ्यांनी सहभाग घेऊन यश संपादन केलं आहे। या ऑनलाईन प्रतिस्पर्धेकरिता संपूर्ण देशभरातून वेगवेगळ्या स्पर्धकांनी सहभाग घेतला होता। त्यापैकी श्री आर्ट कलावर्ग कला निर्मितीच्या अनेक विद्यार्थ्यांना मेरिट सर्टिफिकेट, रोख रक्कम, सुवर्ण पदक, रजत पदक इत्यादी प्राप्त झाल्यामुळे कलाव्रतचे डीन यांनी श्री आर्ट कलावर्ग कला निर्मितीचे अभिनंदन केले आहे। विशेष बात यह है कि अमरावती के श्री आर्ट कॉलेज के श्री सारंग नागठाणे ने अपना विशेष योगदान इस प्रतियोगिता में देते हुए अपने आर्ट क्लासेस के 52 विद्यार्थियों की प्रविष्टियों को भेजा। उसमें से लगभग उनके 10 विद्यार्थी प्रतियोगी पुरस्कृत हुए हैं। मैं उन्हें और सभी उन विद्यार्थियों को जिन्होंने पुरस्कार प्राप्त किए हैं बधाई देता हूं। और इस वर्ष का हमारा अगला आयोजन नवंबर में कला पर्व के रूप में ऑनलाइन ही मनाया जा रहा है। उसमें भी जो विद्यार्थी प्रतियोगितार्थ अपने चित्र भेजेंगे उसमें लगभग 40,000 के नगद पुरस्कार और सर्टिफिकेट्स, गोल्ड मेडल्स प्रदान किए जाएंगे। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कला पर्व होता है। प्रतिवर्ष सभी प्रतिभागियों को न्यास द्वारा सर्टिफिकेट्स, प्रमाण पत्र भी प्रदान किए जाते हैं। इस तरह यह आयोजन हम लोग लगभग 26 वर्ष से लगातार अपने केवल निजी संसाधनों से कर रहे हैं और हमें खुशी है कि लगभग देश के अधिकतम महाविद्यालयों का, कलाकारों का और प्राचार्यों का हमें इस आयोजन के लिए सहयोग मिलता रहा है। धन्यवाद। शिवाय दिवाळीनंतर होऊ घातलेल्या प्रतिस्पर्धांमध्ये अनेक स्पर्धकांनी भाग घेण्याचे आवाहन सुद्धा केले आहे। नमस्कार, मी कुमारी अंकिता गोपाल आजनकर, राहणार वरुड, जिल्हा अमरावती। दरवर्षीप्रमाणे यावर्षी सुद्धा कलाव्रत परिवाराकडून कलाव्रत इंटरनॅशनल ऑनलाईन आर्ट फेस्टिवलचे आयोजन करण्यात आलेले होते। या आर्ट फेस्टिवलमध्ये ज्यांच्या मार्गदर्शनाखाली मी माझ्या पेंटिंगचं सादरीकरण केलं होतं असे म्हणजे श्री आर्ट्स कलावर्ग व कला निर्मितीचे संचालक श्री सारंगजी नागठाणे सर यांच्या मार्गदर्शनाखाली मी या ऑनलाईन कॉम्पिटिशनमध्ये पार्टिसिपेट केलेलं होतं आणि या पार्टिसिपेटमध्ये मला सेकंड प्राइज म्हणजेच 2,500चं प्राइज मिळालेलं आहे। याचं संपूर्ण श्रेय आदरणीय श्री सारंग नागठाणे सर यांना देऊ इच्छिते। त्याचप्रमाणे कलाव्रत परिवाराचे माझ्याकडून मनपूर्वक आभार आणि आपणा सर्वांना धन्यवाद। विदर्भ न्यूज ब्युरो, अमरावती।